Good morning and namaskar everyone. How are you? We are fine, sir. How are you? Sir, fine. How are you, sir? I'm fine. Okay. How many participants we have? So let's get started with this topic, guys. Last we have done with the expressing of quantity as a percentage. Then, so on which turn off your mic, please. Sir, I have doubt. Yes. Sir, yes, sir, 6 points. I haven't finished yet. Sir, I am in doubt in question. Sir, I have a doubt in question number 5. Okay, guys. Tell me one question. कभी भी मैंने विदाउट आस्किंग डाउट मैंने डायरेक्टली स्टार्ट किया है? Sir, 30 paisa of rupees 2. विदाउट आस्किंग डाउट मैंने कभी भी लेक्चर स्टार्ट किया है? नहीं सर. तो पहले पूछने तो दो. The homework part is at 6.5. Probably 3 of them I have done. Remaining 3 I have given as a homework. Yes, any doubt in any of them? Yes, sir. Yes. No. Sir. Yes. Sir, in first one or fourth one? Yes, sir. First one and fourth one. Yes, both answers Yes, are sir, I have doubt in question. Yes. Just a minute. Don't worry, I am doing that fourth one. Both of the answers are same. Turn off your mic now. Thank you. So, I am doing right now the question number 4 of exercise 6.5. Both of the answers, first one and fourth one, answer दोनों का सेम. कटिंग प्रोसेस भी थोड़ी बहुत सेम है. और जो लास्ट वाला जो आपको प्रॉब्लम हो रहा है, that is finding the answer. हाँ, that is also the same. So, see that question number 4, 40 seconds. Guys, in this one, topics में आपको किसी में डाउट नहीं होगा. Next topics में आपको कोई डाउट नहीं होगा because method is not that much hard. The hard is to finding the answer. And so for that, दो टॉपिक आपको आने चाहिए. फर्स्ट वन यहाँ पर आप कन्वर्ट जो करना होता है यूनिट्स, that one 2 minutes you can write like that, 120 seconds. Then and second part is to find the factors. जो फैक्टर्स अगर आपको करने आते वो वाला, और फैक्टर्स आपको कब आएंगे अगर आपको मल्टीप्लिकेशन आता है तो, और यू कैन से दैट टेबल आते हैं तो. देन तो अगर आपको अच्छे से टेबल आएंगे तो वो आप कटिंग प्रोसेस कर पाओगे. और अगर आपको वो वाले कटिंग प्रोसेस नहीं करनी है तो आपको अच्छे से HCF फाइंड करना आना चाहिए. बिकॉज हम कटिंग प्रोसेस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में करते हैं, उसमें ही हम कॉमन फैक्टर जो होता है वो कट करते हैं. सो अगर आपको कटिंग प्रोसेस से नहीं आ रही तो दूसरा ऑप्शन आपके पास है जो मैंने पहले करवाया था, विल फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF. तो वो आपको आना चाहिए. अदरवाइज प्रोसीजर इज नॉट दैट मच, दिस मेथड इज नॉट दैट मच हार्ड. द सेम थिंग वी हैव टू डू, गिवन क्वांटिटी upon total quantity multiply by 100. That's it. इसमें आपको किसी में प्रॉब्लम नहीं है. मेथड इज नॉट दैट मच हार्ड. हार्ड इज दैट कि आपको कटिंग प्रोसेस नहीं आती. Pay attention here. Over here 0 0 I have cut it out. 1 1 0. Huh? So 4 upon 12 we can write like that. 4 3s are, and that 100 multiplied with as it is. And now 4 4 is common, so we can cut it out. Now in the numerator we are remain as a 100, and the denominator we are remain as a 3, and that we got as a percentage. Right? So
That could be the answer, but it is in a fraction form. So either we divide it or we can convert it into the mixed fraction. Mixed fraction में भी आंसर चलता है इसका. It is not compulsory at all times that we are dividing it only. Then mixed fraction में बट कब आंसर चलेगा जब ये properly divide नहीं हो. Then mixed fraction में तब आंसर चलेगा जब ये properly divide नहीं होता है और ये वाला नहीं हो. इसलिए इसका आंसर mixed fraction में चलेगा. But then also we are doing the division. Because हमने पहले से डेसिमल पार्ट ही किया. So 100 divided by 3, 3 3s are 9, minus 10 minus 9, 1. When 0 comes down, it will become 10 again. So again 3 3s are 9, again 10 minus 1, sorry 10 minus 9, 1. Now nothing is there, so we have to put the decimal point over here. So now we can put 0 over here. Again 3 3s are 9, minus 10 minus 9, 1. So again we can put 0 over here because we have already put the decimal point. So as many as 0 we want to put, we can put. So 10 again 3 3s are 9, minus 10 minus 0. 10 minus 9, 1. Then it will go on. It will never stop because यहाँ पर हर बार 1 आएगा. Then और हर बार यहाँ पर हम 0 ही पुट करना रहेगा. हर बार डिवीजन हम 3 से ही करेंगे. And 3 3 हमेशा 9 ही होगा. So it will never stop. It will continue till that. Just like 3 3 3 3 3 3 3. So whenever this kind of answer you got, इसका कोई end नहीं हो रहा. So at that time डेसिमल पॉइंट के बाद आपको पहले 2 डिजिट लिखना है. उससे आगे ज्यादा बड़ा डिजिट नहीं लिखना और उससे आगे जाना भी नहीं है. So after the decimal point, just let me finish. After the decimal point, we just have to write the 2 digits only. So answer of this one will be like that one, 33.33%. And also यहाँ से हमारा आंसर चेंज भी आ सकता है कि अगर हमें डेसिमल पॉइंट पुट नहीं करना तो हमारा आंसर किस में आएगा? मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में. So you can do this one like that. Then so that answer we got like that, 33 and a 1/3%. But this kind of answer you only have to do when the actual division, or if you don't get that proper division, आपका proper division हो नहीं रहा है, that means remainder बच रहा है, तब आप ये कर सकते हो. Then any doubt in this one? Now you can ask. No sir, I have doubt in question number 5. Question number 5 I have done right. Oh sorry, question number 5, it is just like the second one. And second question I have done, there is no that much change in that. You just have to convert that. आंसर भी यही आएगा. The first one का आंसर यही आएगा. सर मैंने दूसरी मेथड से किया है, चले. If the answer is same, then it is okay. Yes sir, I got answer. Yeah. Huh? Whatever I method means, मैं जो मेथड करवा रहा हूँ वो नेचुरली सबको समझ में आ जाए तुम्हारी वैसी वाली मेथड. Otherwise this answer I got in a 2 steps only. Then but ये वाले लंबे वाले की मेथड करो ताकि आपको पता चले कि इस तरह से प्रोसीजर हो one by one. Do anyone want to write this? Anyone want to write this? I ask. No sir. अभी बोलना मत, लिखना बाकी. 2 बार पूछा. Sir, First one is just like this. Answer also you will got the same. Fractional product करना आना चाहिए.
उसमें आप फैक्टर्स फाइंड करना किस तरह से कटिंग प्रोसेस होगी। लास्ट में आपको आंसर इसी तरह से मिलेगा, फ्रैक्शन जो लास्ट में आपका आएगा वो वही होगा 100/3। Next, so that you can try it afterwards. Now, is there any other doubt? No, sir. No, sir, no doubt. No, sir, no doubt. Okay. Okay, then moving towards the next part. Okay, before that, everyone please pay attention here. In this chapter, we have seen overall total 4 types of topics. 4 types के हमने topics लिखे इसमें. I'm just briefly revising it all of them. Then first वाला जो हमारा topic था वो हमारा था फ्रैक्शन और डेसिमल को एक्सप्रेस करना और या फिर कन्वर्ट करना परसेंटेज। फ्रैक्शन और डेसिमल को कन्वर्ट करना परसेंटेज में, so on which we are multiplying it with the 100. हम वो फ्रैक्शन हो या फिर डेसिमल हो जो भी हो उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते थे, then we will got the percentage part of that. अब वो उसका परसेंटेज मिल जाएगा। सेकेंड वाला था वो इसका रिवर्स था, परसेंटेज वी आर एक्सप्रेसिंग परसेंटेज एज अ फ्रैक्शन एंड डेसिमल। दैट इज द सेकेंड टॉपिक ऑफ थर्ड टॉपिक हमारा कौन सा वाला था, दैट वी आर फाइंडिंग the percentage of the given quantity, or you can say that we are expressing the percentage as a given quantity. Then जो given quantity हमें उसमें फाइंड करते थे, हम परसेंटेज दिया होता था, टोटल क्वांटिटी दी हुई तो उसका हमें गिवन क्वांटिटी मिलती थी। नेक्स्ट पार्ट इज दैट फोर्थ टॉपिक, जो हमारा फोर्थ टॉपिक जो अभी हमने किया हो, दैट इज द एक्सप्रेसिंग क्वांटिटी, गिवन क्वांटिटी एज अ परसेंटेज। कि हमें गिवन क्वांटिटी दी होती थी, उसमें टोटल क्वांटिटी दी होती थी, एंड उसके अकॉर्डिंगली उसको गिवन क्वांटिटी का परसेंटेज हमें फाइंड करना। दैट इज अवर फोर्थ टॉपिक। डन। टॉपिक्स किसी में कोई हार्ड है नहीं। फर्स्ट वन अगर आप देखो तो फर्स्ट वाला टॉपिक एक्सप्रेसिंग परसेंटेज फ्रैक्शन एंड डेसिमल एज अ परसेंटेज, तो उसमें हम मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते। उसके रिवर्स में हम डिवाइड बाय 100 करते थे, विच इज फ्रैक्शन परसेंटेज टू डेसिमल एंड फ्रैक्शन। देन परसेंटेज एज अ डेसिमल एंड फ्रैक्शन, उसमें हम डिवाइड बाय 100 करते थे। थर्ड वाले में हम क्या करते थे, परसेंटेज को हम कन्वर्ट कर देते थे फ्रैक्शन में, और उसके बाद हम मल्टीप्लाई करते थे टोटल क्वांटिटी। परसेंटेज को हम कन्वर्ट कर देते फ्रैक्शन से, दैट मीन्स हम उसमें डिवाइड बाय 100 करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे टोटल क्वांटिटी से, एंड वी गॉट आंसर एज अ गिवन क्वांटिटी। परसेंटेज गिवन क्वांटिटी वी गॉट एज आंसर इन द थर्ड टॉपिक। फोर्थ टॉपिक में क्या था, ये उल्टा हो जाता था कि हमें गिवन क्वांटिटी दी हुई थी, उसके नीचे हम एज अ डिनोमिनेटर लिखेंगे टोटल क्वांटिटी एंड मल्टीप्लाइंग इट विद द 100, उसमें हम डिवाइड बाय 100 करते थे थर्ड वन में। इसमें हम फोर्थ टॉपिक में हमने मल्टीप्लाई बाय 100 किया, एंड एट द एंड वी गॉट आंसर एज अ परसेंटेज। देन सो दिस आर द, यही सिर्फ 4 टॉपिक है। मेथड इज नॉट दैट मच हार्ड, ऑल द टॉपिक्स आर वेरी इजी। अगर इसमें आप वो मिक्सअप हो जाते हैं तो वो थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा। सो फॉर दैट यू हैव टू डू सम ऑफ रिवीजन फॉर दैट वन। देन द हार्ड पार्ट इज देयर व्हेनेवर देयर इज अ काइंड ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और फैक्टर्स, तो वहां पे आपका हार्ड पार्ट आएगा। दैट मीन्स अगर आपको वो वाला पार्ट नहीं आ रहा है तो आपको वो आगे वाला पार्ट रिवाइज करना पड़ेगा, दैट इज फैक्टर्स वाला, फ्रैक्शन वाला, एचसीएफ वाला, डेसिमल वाला, जो वाला पार्ट में आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, because method is not that much hard. Okay, why am I explaining this part? It is related to our next topic. There is no new topics. As I said, इस chapter में सिर्फ 4 topics here. One more exercise is remaining, that is based on the word problems. जिसमें हमें टॉपिक हमने जो थर्ड वाला टॉपिक किया और फोर्थ वाला टॉपिक किया, then तो वो दोनों टॉपिक के ही वर्ड प्रॉब्लम्स इसमें दिए हुए। There is not that much difference between the word problems and the actual questions.
Then it's just difference is that कि उसमें वर्ड्स में दिया है, इसमें हमें क्वेश्चन में दिया है, उसमें हमें नहीं कुछ दिया होगा कुछ, इसमें हमें कौन सी मेथड करनी है, कैसे करना है, इसमें हमें ऑलरेडी दे दिया होता है, इसमें हमें ऑलरेडी दे दिया होता है कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ दिस वन और देन एंड फाइंड द गिवन क्वांटिटी ऑफ दिस. सो उसमें इसमें हमें डायरेक्टली दे दिया होता है, वो उसमें हमें फाइंड करना है कि इसमें हमें करना है. दैट्स द ओनली डिफरेंस इन दैट वन. So exercise 6.6 we are starting right now. That it is given as a problem solving through model method, but अब तक हमने किसी में model represent नहीं किया है, so I don't want to add that part in this one. Then because that would be again hard for you. So we are directly starting that one. Okay. So exercise 6.6. Okay, see the first one. Question number 1. Pay attention here. Turn off your mic, please. Irfan gave 50 rupees out of 150 to his friends. And तो उसके पास कितने रुपीस है? 150 रुपीस है, उसमें से वो 50 रुपीस अपने फ्रेंड को दे रहा है. How much percentage of his money did he give? So in this one guys, whenever we are solving any kind of word problem, so शुरुआत में हमें initial data जो हम लिखते हैं, that we have to write in the word form. और वो हमें कोई अलग नहीं लिखना होता है, कुछ नया नहीं बना के लिखना होता है. इसमें जो दिया है वही हम सेंटेंस भी लिख सकते हैं. Just like in this one, it is given that Irfan gave 50 rupees 50 out of 150 to his friend. So वो अगर हम लिखे तो भी चलता है. Just like Irfan gave rupees 50 out of rupees 150 to his friend. Then, so now if you see this thing properly, then over here two quantity is given. One is the 50 rupees and one is the 150 rupees. Out of this two quantity, one quantity, this one is the given quantity, and this one is the total quantity. Given quantity वो दे रहा है ना इतना. So this one is the given quantity and this one is the total quantity. Why I am writing down this one? So you will get an idea about that कि इसमें हमें करना क्या है. Now सभी में हमें given quantity और total quantity दिया होता है और इसमें हमें फाइंड भी करना है परसेंटेज. दैट मींस हमारा फोर्थ टॉपिक जो हमने किया, given quantity as a percentage, that we have to do. Then so I am writing down that over here. We have to find given quantity as percentage. Then there is no need to write down this one. This is just I have written this one for you guys. So you will get an idea कि इसमें करना क्या. That is our fourth topic. So अभी हमने recently किया. So now we can do this one. अभी हमें पता भी चल गया कि इसमें numbers भी कौन से, method भी पता चल गया कि कौन सी करनी. उसके बाद हमें जो regular process है वही करना. That is first given quantity as a 50, total quantity as a 150. Then that is the numerator, denominator, and we second step is we will multiply it with the 100%. यहाँ पे मैं परसेंटेज भी क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ पे 100 से लिखोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा. परसेंटेज इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि लास्ट में आपको वो आंसर जो आएगा वो परसेंटेज के फॉर्म में लिखना. So now 0 0 can be cutted over here. 5 we are writing as it is. 15 we can write like that. 3 5
and multiply it with the 100. Okay? So now that 5 common will be cutted out. So we are remaining with, guys, you will be surprised. This is the third same type of numerator. We got 100 and denominator we got 3. So 100 by 3%. Again, done? So yeah, इसका भी आंसर वही आएगा बिकॉज मिला तो में वही है. Sir, The answer answer would be 33.33. yes, answer would be 33.33%. And for the answer, this is not particularly we can say that why, because it is a word problem. So we have to compulsory write the answer in the sentence form. और इसके लिए भी आपको गाइस और कोई नया सेंटेंस फॉर्म बनाने की जरूरत नहीं है. क्वेश्चन इसमें दिया है उसी को ही आंसर में कन्वर्ट कर दो. हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ हिज मनी डिड ही गिव? हाउ मेनी परसेंटेज? 30. सो 33%. हाउ मेनी की जगह आप सिर्फ 33%, 33.33% लिख दो. 33.33% of his money he gave to his friend. That's it. And it is, this one is also not guys compulsory. अगर ये तो अगर आपको नहीं आ रहा है इस तरह से आंसर लिखने के लिए तो आप भी जाते हो. अदरवाइज सेंटेंस वाला आंसर तो आप अपने आप भी फॉर्म कर सकते हो. Done? So that's it. Is there any doubt in this part? No, sir, no doubt. No, sir. Okay. No, sir, no. Given quantity and total. Sorry? We have to write. Yes, obviously. Whatever I have written over here, that you have to write. So guys, remember this part कि आपको इसमें इस तरह से करना है. भले आप एग्जाम में ना लिखो तो चलेगा, बट अभी लिख लेना ताकि आपको पता चल जाए. Start writing. And one more thing guys, whenever I have done with the writing, तो जब मैं बाद में जब फ्री होता हूँ, at that time कोई लीव मत होना क्लास में. If you have already done with the writing, then also. Why I am asking like that? Because of that, कि whenever I free, I take the attendance. तो अगर आप लीव हो जाओगे तो मुझे नहीं पता चलेगा, and that will be marked as you are absent. Then, so although if you are done with the writing, don't leave the class. Sir, my work is done. Okay. Sir, my work is done. Okay. Sir, my also work is done. Okay. Sir, my work is done. Then no one will speak.
until I ask. Sir, we can write the last sentence by ourselves. Yes. Okay, anyone is remaining with the work? No, sir. Can I erase it then? Sir, wait a minute. Sir, 2 minutes. Okay. Sir, done. Okay. Sir, done. Okay, I'm erasing Sir, it done. then. Okay. Next, second one. If you see the second one, guys, then it's just like the first one only. Then Rahul earned 5,000. He saved rupees 500. What percentage of his earning that he saved? Then that is just like a second one only. 5,000 is the total quantity. 500 is the given quantity. Then do it by yourself. Third one I'm doing. Rita had rupees 200. Turn off your mic, guys. Next time, this is the last one. Next time I will not ask for that. मैं directly आपको throw out कर दूंगा. Third one, Rita had rupees 200. She spent 16% of her money in books. और books में 16% of money spend कर रही है. How much did she spend on books? कितनी spend कर रही है books में? So let's write this one. Question number 3. Given data. Sentence form. Rita spent 16% out of how many? 200 of rupees 200 on books. गाइस यहाँ से आपका इसके ऊपर ध्यान आ जाना चाहिए. That kind of things we have already seen. So that means this one is the third topic. ये हमारा third topic है. So on which we find the quantity from the percentage. Percentage हमें दिया होता है तो उसमें से हम given quantity find करते हैं. So I'm writing like that. So we have to find percentage of given quantity. Okay, so directly write down that part only as it is over here. 16% of rupees 200. So first step, convert this
percentage into fractions, so 16 divided by 100 of will convert it as a multiplication and multiply it with the total quantity, which is 200. That is our second step. So now it is easy only. 2 to 0 will cut it off 100 and 200. Now remaining is a 16 and 2. 16 twos are rupees 32. Then, so that answer we can write in the sentence as Rita spent rupees 32 on books. That's it. Then, any doubt in this one? No, sir, no doubt. Write down this one. Then, so mainly इसमें आपको जो टॉपिक कॉमन 3 है, परसेंटेज लिया होगा है और क्वांटिटी फाइंड करना है, और टॉपिक नंबर 4 जिसमें दोनों क्वांटिटी दी हुई होगी और परसेंटेज फाइंड करना है गिवन क्वांटिटी का. That 2 topics are only there in this word problems. Then वही 2 है. आप इससे शॉर्ट भी ट्रिक याद रख सकते हैं कि किसमें आपको कैसे फाइंड करना है. अगर परसेंटेज दिया है तो आपको गिवन क्वांटिटी फाइंड करनी है क्वेश्चन में. अगर क्वेश्चन में परसेंटेज दिया है तो उसकी गिवन क्वांटिटी फाइंड करनी है. वो आंसर आपको क्वांटिटी में ही मिलेगा जैसे यहाँ पे मिला. और अगर परसेंटेज नहीं दिया है, जो क्वांटिटी दी हुई, तो उसका आपका परसेंटेज फाइंड करना है. देन वो आंसर आपका परसेंटेज में मिलेगा. Sir, my work is done. Sir, my work is done. Sir, my work is done. Okay. Sir, my also work is done. Okay. So can I erase it? No, sir. No, sir. वो स्वामी बाकी है. Sir, my work is done. Okay. Sir, now you can eat it. Okay. Guys, I'm erasing it. Okay. So, next, if you see the question number 4. So that is just like the third one only. A box contains 400 marbles. 30% of the total marbles are red. How many marbles are red? Then in this one also we have to find the quantities only. That's it. Then, so that you can do it by yourself. It is just like the third one. Then, and fifth one. 9 out of 45 students are in a class were absent. What percentage of the class is absent? That is just like the first one. Then, उसमें हमें given quantity or total quantity दी हुई है. Given quantity is 9 and total students are 45. Then, तो उसका हमें percentage find करना है. That means उसमें fourth वाले topic का measure करना है और fourth one है उसमें हमें third वाले topic की measure करना है. Then, so that you can do it by yourself. So as per that, today's your homework will be completing
exercise 6.6 in assembly. Guys, any doubts related to homework or No, anything? sir, no doubt. No? No, sir. Okay, then that's it for today from my side, guys. Then Bye, sir. from this we have actually completed our syllabus of term 1. Yeah. Bye, Bye bye, sir. guys. Bye. Bye, sir. See you tomorrow. Bye, sir. Have a nice day. Bye, sir. Bye. Have a nice day. Bye. Nice day. Bye.